everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Evolution and the topic what are the evidences for evolution. In today's session we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is, how is the study of fossils and evidence of evolution of life forms which have taken place on the earth? Explain given 2 reasons. And the next type is short answer type question for 3 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2015. So the question is, how does the study of fossils support evolution? Explain. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें सिंपली ये एक्सप्लेन करना है कि इवोल्यूशन की स्टडी में फॉसिल्स कैसे हेल्प करते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स बेटा लाइफ फॉर्म्स के हार्ड पार्ट के रिमेन्स होते हैं जो रॉक में पाए जाते हैं, और जो रॉक्स होती हैं बेटा वो अर्थ क्रस्ट में अलग अलग सेडिमेंट्स बनाती हैं, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये लाइफ की अलग अलग एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इन सेडिमेंट्स में जो फॉसिल पाए जाएंगे वो भी अलग अलग एजेस के होंगे. तो बेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड को. तो अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे. इससे हमें पता चल जाएगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है. इन सारे एविडेंसेस को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. क्लियर? So the answer is fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. Rocks form sediments and a cross section of Earth's crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth. Different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms, example dinosaurs. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. All this is called paleontological evidence. So I hope this question is clear to you. Thank you.